Okay, we are live. Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to yet another fresh week of Hindu analysis. Today is Monday, 29th of December. We are live. I hope I'm audible and visible to everyone. If you guys are here on the stream, I would appreciate some responses. अगर आप लोग join कर चुके हो, please let me know in the chat box. Himanshi is here. Good evening, Himanshi. All right, ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. Just a few more sessions of the Hindu analysis left for 2025. Make sure that you make the most out of them and start the new year on a good note, on a positive note, on a positive mindset. चलो ठीक है. Let's start with today's discussion by looking at the agenda of the analysis session. Now, today's newspaper is a short one. Not a lot of new articles in terms of GK news, but we do have a few good editorial articles which we'll discuss. One of them is written by Mr. Shashi Tharoor, which talks about the research deficit in India. It's quite a detailed article, and there are a lot of aspects which we can talk about in this article. We'll discuss this on the PPT. Then there is another article which talks about linked civilization. This is another editorial which talks about the relationship between India and Iran. And the third one is regarding minorities in India. We recently had the festival of Christmas celebrated every year on 25th of December. This article addresses the situation of minorities in our country. I think it's an interesting article. थोड़ा सा आपको constitutional background भी दूंगा मैं आपको कि which constitutional articles protect the interest of minorities in India. By minorities, I mean minority religions, right? Okay, and then of course we have our three new vocabulary words of the day. Like always, okay, काफी सारे लोग आ चुके हैं. Anjani is here, Swara is here, Siddhi is here, Vrinda is here. Very good evening. I can see a lot of females in the chat box. Where are my guys? बाकी लोग कहाँ हैं? Okay, chalo, chalo, chalo. ठीक है. Let's begin with our discussion by going to the newspaper of the day. I hope you guys have started reading the newspaper on a regular basis. If you haven't, please, please, please start doing that. Any newspaper, either the Hindu or the Indian Express, these two are the standard ones which I recommend. प्लीज न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो. यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर न्यूज़पेपर. ऐसा बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन मत रखना कि आपको पूरा A to Z न्यूज़पेपर पढ़ना होता है. नहीं, यू हैव टू जस्ट रीड द फ्रंट पेज, द एडिटोरियल्स एंड स्किम फॉर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच माइट बी रेलेवेंट फॉर क्लैट. एक लाइन में बस इतना ही पढ़ना है आपको. एंड दिस शुड हार्डली टेक यू अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, है ना. एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको उतना भी नहीं लगेगा. फिर यू विल जस्ट बी एबल टू डू इट इन अप्रोक्स 20 मिनट्स. मुझे ऑनेस्टली 15 से 20 मिनट लगते हैं रोज का न्यूज़पेपर पढ़ने में आप लोगों के लिए. एंड उसकी फिर बाद में मैं रिसर्च करता हूँ, उसमें अलग 15-20 मिनट लगते हैं. सो इट्स नॉट दैट लेंदी ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है. सो I think you should definitely start it as soon as possible because the returns it gives you definitely get compounded over time, be it in terms of vocabulary, be it in terms of your reading comprehension, be it in terms of your critical thinking, be it in shaping your perspectives on various different topics, and be it GK, which is the primary thing which you are doing. Okay, Yashal is here, Rishit is here. Could you please explain why India is giving asylum to Sheikh Hasina despite all that's happened? It's a very good question. I'll definitely answer that. Riddhi Singh, I've noticed that Indian Express is more comprehensive. It's subjective opinion. है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं, सिर्फ क्लैट नहीं, यूपीएससी भी एंड अदर एग्जाम्स भी, they refer to Hindu as the holy grail, and there is the flip side as well. People who find the Indian Express more comprehensive, and I'll give you that. On some days, I definitely think that Indian Express has better editions than the Hindu for sure. But on a larger scale, being doing this for approx more than a year now, I think that the Hindu is more approachable for a student. I think the Hindu is more easier to navigate for a student and covers the essential things pretty succinctly. So I think this is a good choice by any means. Parth is also here. Good evening. Chalo, chalo, chalo. ठीक है, let's start our discussion. मैं start करता हूँ by answering Rishit's question. Why India is giving asylum to Sheikh Hasina despite all that's happening? So उसके लिए आपको थोड़ा सा शेख हसीना का बैकग्राउंड पता होना चाहिए. कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी लीडर नहीं है शेख हसीना की आए और इंडिया ने उनको रख लिया. शेख हसीना comes from a very rich background of politics, from a very long historical background of politics.
इनके जो फादर साहब थे, हु प्लेड अ वेरी की एंड वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर भी कहते हैं उसको, बट इट वाज आल्सो द वॉर विच क्रिएटेड बांग्लादेश। पहले इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, है ना, दो पाकिस्तान थे पहले, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब जो है सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान है। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया आफ्टर द लिबरेशन वॉर, एंड शेख मुजीबुर रहमान इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट लीडर बैक देन, एंड उनकी सुपुत्री हैं शेख हसीना जी। सो देखो, जियो पॉलिटिक्स में ना आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिमिलर क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि वी ऑल नो, एवरीवन नोज अनडिस्प्यूटेडली दैट तालिबान इज रूलिंग अफगानिस्तान फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ years, and we are still hosting Talibani leaders, we are having diplomatic relationship with them. Why are we doing that? We all know that they are not the best regime when it comes to women empowerment. They are not the best regime when it comes to liberty, freedom of speech and expression, human rights, etc., etc. But why do we have a diplomatic relationship with Taliban? That should also be a question you should ask. It's simply because geopolitics is evolving in nature. The single one line answer is geopolitics बदलती रहती है, एंड आपको अपने बेस्ट इंटरेस्ट में देखना पड़ता है कि आप सबको बैलेंस आउट करके कैसे चलो। अब ये हो सकता है कि अभी शेख हसीना इज इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन एंड शी इज इन एग्जाइल इन इंडिया, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट after change of turn of events, after change in geopolitics, she might return back to power. And ऐसा बहुत examples हमने देखे हैं हिस्ट्री में in different regimes की the leaders who are ousted then come back to power and become even more stronger. तो अब मानो आप शेख हसीना से रिश्ते अभी खराब कर लो, फिर 4 साल बाद वो फिर से पावर में आ जाती है। वुड बांग्लादेश बी अ फ्रेंडली नेशन टू यू इफ यू हैव अ बैड रिलेशनशिप विद शेख हसीना? द आंसर इज नो, एंड यू डो नॉट वांट अ बैड रिलेशनशिप विद अ नेबर। नेपाल में हमने बहुत बार देखा रेजिम चेंज होती, कभी केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट आ गई, कभी किसी और की गवर्नमेंट आ गई, एंड हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे अच्छे रिलेशनशिप बना के चलें। इसलिए तालिबान से भी हम अच्छे रिलेशनशिप बना के चल रहे हैं, नोइंग फॉर द फैक्ट दैट दे आर नॉट द बेस्ट रेजिम आउट देयर। बट क्योंकि हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत सेंसिटिव नेबर है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान, and we want Afghanistan to be on our side. We also want Bangladesh to be on our side, looking at China. We also want Nepal to be on our side, looking at the threat of China. We also want Sri Lanka to be on our side. So that is why, from a diplomatic point of view, from a geopolitical point of view, it is very important that you play these moves very carefully and you understand that किसी के भी आप दुश्मन मत बनो, ठीक है? दोस्त किसको बनाना है दैट सेकेंडरी, बट आप दुश्मनी किसी से भी नहीं ले सकते इन जियोपॉलिटिक्स। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आई होप दैट satisfies your doubt, Rishit. Riddhi is saying in today's newspaper, specifically Indian Express has few extra content. वही मैंने कहा ना, I definitely give you that कि किसी किसी दिन Indian Express better होता है, and if you guys have demands of a particular article being discussed, we can do that in the class. ठीक है, I'm completely open to that. All right, चलो start करते हैं आज का discussion with today's newspaper. इलेक्शन कमीशन कंडीशनली हॉल्ड्स वोटर हियरिंग अंडर एसआईआर इन बंगाल। हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं न्यूज। एसआईआर इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन व्हिच इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स, एंड इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रोसेस चल रहा है, अब इसमें न्यू इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं टू द ऑफिशियल्स इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा है कि आप यू नो दे आर नॉट सपोज टू समन सर्टेन वोटर्स फॉर हियरिंग बिकॉज दीज वोटर्स आर मार्क्ड एज अनमैप्ड। अनमैप्ड मतलब इनके जो फैमिली लिंक्स हैं वो अभी हमारे पास नहीं है, जो पुरानी वोटर लिस्ट में थे। And officials should not call these voters for hearing. They should not serve them notices, and they should keep these notices on record. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. It's not that important for you specifically. Left hand side पे you see airlines must enforce rules without delay, cautions DGCA. What is DGCA? It's the Directorate General of Civil Aviation, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बेसिकली गवर्न करती है बॉडी, दैट इज द डीजीसीए, एंड गाइडलाइंस इशू करते हैं ये लोग एयरलाइंस के लिए। एंड अभी इन्होंने वार्निंग्स इशू करी है एयरलाइंस को अबाउट देयर प्रिपेयर्डनेस इन फॉलोइंग देयर गाइडलाइंस। तो इन्होंने कहा है कि आप जो है फ्लाइट सेफ्टी इंश्योर करोगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंश्योर करोगे, ओवरऑल एविएशन सेफ्टी इंश्योर करोगे, एंड उसके लिए आपको जो रूल्स हैं, जो सीएआर के रूल्स हैं, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के, एंड जो एआईसी के रूल्स है विच इज एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर्स के, वो आपको कंप्लाई करने हैं। उसके लिए आप तैयार नहीं लग रहे हो तो उसके लिए उन्होंने वार्निंग इशू करी है सारी एयरलाइंस को। हमने रिसेंटली देखा था इंडिगो वाला फियास्को काफी हुआ था, एंड वहां पे हमसे सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम भी पूछ लिया गया था इस बार के क्लैट एग्जाम में। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन ट्रैकिंग दीज अपडेट्स. Next up is officials deny Bangladesh
claims on Hadi's killer crossing into Meghalaya. Who's Hadi? This was a political leader in Bangladesh who was recently killed. एंड इंडियन अथॉरिटीज ने कोई भी क्लेम डिनाई कर दिया कि इसमें इनके जो सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने एलिजिडली मारा है इस बांग्लादेशी लीडर को, वो इंडिया में क्रॉस करके आ गए हैं मेघालय से. दिस लीडर वाज शरीफ उस्मान हैदी. हमने डिस्कस किया था इनके बारे में. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. इंडिया के जो डिप्लोमेटिक सोर्स हैं और मेघालय की जो पुलिस है उन्होंने इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है, सेइंग दैट दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट. ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं टुवर्ड्स द हॉस्टिलिटीज being meted out to the minorities in Bangladesh. Recently हमने एक काफ़ी tragic video देखी थी, a Hindu man being beaten to death in Bangladesh. So that was quite unfortunate. एंड उसी की वजह से थोड़ी सी टेंशन अभी बनी हुई है दोनों मिनिस्ट्रीज में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज में एंड दोनों एम्बेसीज, एम्बेसीज तो नहीं बोलेंगे, हाई कमीशन के अराउंड, है ना. एंड दैट इज व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट हियर. ओके, आगे चलते हैं. कांग्रेस लीडर स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. म्यांमार होल्ड्स फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस सिंस आर्मी टेक ओवर. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके लिए आपको थोड़ा सा म्यांमार का बैकग्राउंड पता होना चाहिए. म्यांमार आल्सो वन ऑफ आवर नेबर, प्रीवियसली नोन एज बर्मा, नाउ नोन एज म्यांमार. एंड काफी टाइम से ये मिलिट्री रूल के अंडर रहा है. मोस्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के थ्रू आउट, पूरे दौरान मैक्सिमम टाइम ये लोग मिलिट्री रूल के अंडर ही रहे हैं. फेब्रवरी 2021 में क्या हुआ, म्यांमार की जो आर्मी है जिसको तत्मदाव कहते हैं, TATMADAW, तत्मदाव, उन्होंने एक कू कंडक्ट किया. कू समझते हो आप लोग, विद्रोह, जिसमें और स्पेसिफिक वर्ड है इसका, तख्ता पलट. सो दे कंडक्टेड अ मिलिट्री कू and they overthrown the elected government, the civilian government of a very famous Myanmar leader. Can anyone tell me the name of that leader? She was a female. She was a female. क्या होता है? The leader was a female, and she is very well known for her, political movements, for her leadership, etc. And she was overthrown. Then she was put into jail. Which leader am I talking of? Anyone who's aware? Aung San Suu Kyi is the right answer. Rishit is saying, thank you, small follow-up. Want extraditing Sheikh Hasina better relationship further, cause at this point it looks very much like BNP and Tariq Rahman will come into power. Yes, from a short-term perspective, definitely that looks like the good move. But from a long-term perspective, that may or may not be the good move. So इसीलिए we are, looking at the situation कि अभी कौन power में आता है. We are looking at how the civil unrest plays out, how the elections play out, and then probably we'll play our moves in a more informed manner. अभी हो सकता है फिर से तख्ता पलट हो जाए, बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाए, बट फिर से कू हो जाए, फिर से अनरेस्ट क्रिएट हो जाए और शेख हसीना के जो पार्टी के लोग हैं वो पावर एज्यूम कर लें, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, शेख हसीना वापस चली जाए, पीएम बन जाए. वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. So that is why you have to play your cards very carefully when dealing with such sensitive situations. Aung San Suu Kyi, by the way, is the right answer for my question. And since that coup in 2021, the country has been under civil war. Myanmar has been under civil war between the military as well as the, दूसरी साइड कौन सी होगी आपकी, प्रो डेमोक्रेसी आर्म्ड ग्रुप्स जिनको आप कह सकते हो. एंड बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं बैन कर दिए गए, जेल में डाल दिए गए, अंडरग्राउंड चले गए. एंड उनके जो सीनियर एक मिलिट्री जनरल हैं जिनका नाम है मिन ओंग लेंग, वो जो है इनके मिलिट्री जनता रजीम के हेड बन गए और मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गए इन म्यांमार, जनरल मिन ओंग लेंग. एंड उसके बाद तब से लेके अब तक 4 साल बाद कोई भी प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं म्यांमार में. दिस इज द फर्स्ट टाइम that general elections are being conducted in the last 5 years. मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करवा रही इनको. 3 फेज में होगा ये इलेक्शन एंड इट इज एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली ये जो मिलिट्री जनरल हैं इनके मिन ओंग लेंग, ये मोस्ट लाइकली प्रेसिडेंट बन जाएंगे इलेक्शंस के बाद. एंड इनकी जो मिलिट्री बैक पार्टी है जिसको यूएसडीपी बोलते हैं, विच इज द यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, that is the strongest contender among the other 50 plus parties which are contesting the election. But this would take the country one step closer towards democracy. But on the other hand, the credibility of polls is definitely under question क्योंकि opposition है ही नहीं, सारी opposition जेल में है, तो वोट तो उसी को पड़ेगा जो पावर में है. And that is what is happening in Myanmar. तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा, कॉन्टेक्स्ट मैंने खुद ही बताया ऑब्वियसली आपको, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए म्यांमार के बारे में. ये आपको दिख रहे हैं फोटो में, यही है इनके जनता के चीफ सीनियर जनरल मिन ओंग लेंग. एंड म्यांमार की कैपिटल है नेपिडाओ. दिस इज द कैपिटल. ऑलराइट, सिटी बेस्ड न्यूज यू कैन स्किप, nothing noteworthy in the city based news segment.
आगे चलते हैं हम स्टेट बेस्ड न्यूज में भी. देयर इज नथिंग मच विच इज नोट वर्दी. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स. Nothing important for us here. ओके, दिस इज अगेन पॉलिटिक्स. सी, ये स्टेट पॉलिटिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आप लोग डायरेक्टली राइट अवे स्किप कर सकते हो अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ न्यू इनिशिएटिव, देयर इज अ न्यू स्कीम, देयर इज अ न्यू लॉ विच हैज कम अप. उसके अलावा मोस्ट लाइकली आपकी जो स्टेट बेस्ड न्यूज होती है वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होती है. ठीक है. Okay, next up is the editorial segment. The first editorial which you see is the grand vision and the great Indian research deficit. तो इंडिया R&D में काफी ज्यादा पीछे चल रहा है. अपनी जीडीपी का हम बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं R&D पे as compared to other developing and developed countries. And that is the bedrock of this particular article कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है सही से फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा towards research and development. And that is what he highlights. The current deficit in R&D investment cannot sustain India's ambition to become a global innovation leader. इस पे हम डिटेल में बात करेंगे. काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने को. We'll discuss this on the PPT. So will we. The article on the left, which talks about the lost message, assurances of state protection for minorities must go beyond symbolism. Symbolism मतलब दिखावा यहाँ पे in this context. And yeah, we'll talk about minority rights and minority protections इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि मोदी जी ने क्रिसमस पे क्या मैसेज दिया, बट द अंडरलाइंग थिंग इज माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया, which we'll discuss. Linked civilizations, a modern strategic partnership. We are talking about the partnership between India and Iran. And this article is written by the ambassador of Iran in India, Mr. Mohammad Fatah Ali. And he says that a revitalized, मतलब renewed partnership between Iran and India will aid economic partnership and ensure stability in West Asia. इसको भी हम करेंगे पीपीटी पे डिस्कस, थोड़ा सा देखेंगे इंडिया और ईरान के लिंक्स के बारे में, एंड विल डिस्कस इट फर्दर. लेफ्ट हैंड साइड यू सी शैम इलेक्शन. शैम मतलब मजाक एक तरीके से, इट्स अ मॉकरी. म्यांमार जनता's search for legitimacy through controlled polls is futile. Futile मतलब बेकार, व्यर्थ, यूजलेस. ये हमने डिस्कस कर ही लिया मोस्टली. मैंने आपको बता ही दिया व्हाई इज इट फ्यूटाइल एंड व्हाई इज नॉट अ जेन्युइन डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, क्योंकि ऑपोजिशन कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्ग. That is why this is not a true electoral democracy. This is just the military regime trying to gain legitimacy, trying to gain authenticity through these elections. ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Okay, Tamil Nadu needs to think beyond the metro. This you can skip. State specific article. Venezuela's resource curse. Venezuela, आप लोग को पता ही है, one of the most resource rich countries, one of the most oil rich countries, having the world's most proven oil sources. Despite that, the country has a strained economy. क्यों? Mostly because of their geopolitical relationships. US जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है इस समय हाथ पैर धो के. एंड इनके जो ट्रेड रूट्स हैं, जो ट्रेड एम्बार्गोज हैं, जो ऑयल वेसल्स हैं, उनको ब्लॉक कर रहा है बिकॉज ये लोग कॉपरेट नहीं कर रही यूएस के साथ. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो. अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिया गया है वेनेजुएला के बारे में. Gaps in regulating digital campaigns. This you can skip. We can read the gist of this. India's election rulebook governs a campaign ecosystem that no longer runs only on parties and candidates, as political persuasion shifts to platforms and intermediaries operating outside formal regulatory structures. Digital advertising data from Bihar Assembly election shows that third party actors outspend official parties and candidates and operate with higher campaign efficiency. Absence of regulatory obligations for these actors create an accountability gap, allowing opaque matlab non-transparent, financial entanglements and unaccounted influence to persist. आसान भाषा में बताओ तो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके डिजिटल कैंपेन्स, जो ऑनलाइन कैंपेन्स हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, rather than the parties and the candidates. डिजिटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. What are rare earth elements and why is everyone looking for them? Rare earth elements, as the name suggests, are certain elements which are found rarely across the earth and have a lot of use cases in semiconductors, in green technologies, in development of a lot of equipments. देखो, ये कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं. स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम, सीरियम, Praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, terbium, and lutebium. These are the rare earth
फॉर हिस्टोरिकल रीजंस। पढ़ सकते हैं आप इनके बारे में, इनके यूजेस के बारे में। मोर ऑफ अ केमिस्ट्री ओरिएंटेड आर्टिकल। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट या दीज आर अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। चाइना के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, एंड अफ्रीका में बहुत सारे आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं इसके। मंगोलिया का इंडिपेंडेंस डे है। वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया विद ग्रेट होप, सेज आवर प्राइम मिनिस्टर, विटनेसिंग नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स। ऑलराइट, a president undertakes a dive sortie in submarine, calls it a special experience. This was INS Vakshir on the western seaboard. And our president, we all know, this is Draupadi Murmu. Sortie मतलब एक तरीके से ऐसे चक्कर लगाना होता है. That is what a sortie is. This was a Kalvari class submarine at the Karwar Naval Harbor in Karnataka. Okay. She became the only second president of India to undertake a sortie in a submarine after late President APJ Abdul Kalam. Then what else? These are not important. This is again politics. Politics, politics, politics. Documentary filmmaker S. Krishnaswamy passes away. He was an internationally acclaimed documentary and television filmmaker, produced 900 non-fiction films, including Indus Valley to Indira Gandhi, and he passed away on Sunday in Chennai. May his soul rest in peace. His magnus opus, Indus Valley to Indira Gandhi, was shot in 100 locations across the country. S. Krishnaswamy. All right. Airlines must enforce regulations without delay, cautions the DGCA. Okay. ठीक है. Zelensky is talking with allies en route to US as Russia strikes batter Kiev. Batter मतलब नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ कर देना Kiev में. And Russia is continuously striking Kiev, putting pressure on Ukraine. And इनके जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो कंसल्टेशंस कर रहे हैं दूसरे एलाइज के साथ, अपने यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो के साथ, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ. He was stopped in Canada and he stopped in Canada and also met the Prime Minister of Canada, Mark Carney. So basically, he's trying to gather support against Russia and trying to ask for help. They are trying to go towards a ceasefire. And Russia के जो अटैक हैं वो दिखा रहे हैं that they are not really interested in peace, despite the diplomatic efforts. US ने कोशिश करी थी बीच में एक दो बार ceasefire करवाने की, but that also failed pretty badly. Pakistani president says he was advised to hide in a bunker during Operation Sindoor. He's Mr. Asif Ali Zardari. All right. China hosts today talks to solidify Thailand-Cambodia ceasefire deal. We know that both these countries have been in a fight in the past few weeks over the border, Trivihar Temple. Brigade Bado, French cinema icon and screen siren of 1960, dies at 91. All right. इंडिया ने श्रीलंका को आई थिंक फिर से हरा दिया है. श्रीलंका को ही हराया ना. या 4-0 से इंडिया की वुमेन टीम आगे हो गई है इन दिस सीरीज. Carlson, Goryashkina claim World Rapid titles. Humpy and Arjun win bronze medals at the World Rapid Chess Championship. Okay. That's pretty much it about the newspaper for the day. Ashes जो है जीत चुकी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, बट बहुत सालों बाद टेस्ट मैच जीता अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने इन ऑस्ट्रेलिया इन द एशेज सीरीज. 2 दिन में खत्म हो गया वो टेस्ट मैच. इट्स क्रेजी. बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी एंड डिस्कस द रिमेनिंग आर्टिकल्स व्हिच वी हैव. चैट में क्या चल रहा है? आंग सान सू की has received 27-year imprisonment. Could you tell us what charges? Charges are mostly, treason against the country. वही जो देश के खिलाफ वाले चार्जेस होते हैं, सेडेशन हो गया, ट्रीजन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सारे चार्जेस हैं. Do you have any idea about how is ICFI for Lords? Okay, I mean, I would not keep it as a top priority. I would rank it slightly below Symbiosis, Jindal, and couple of other private colleges. But yeah, it's okay. That's what I would say. बहुत ज़्यादा idea तो नहीं है मुझे, to be very honest. All right, let's start with the first article. Research deficit. India stands at a pivotal moment
in its economic and technological trajectory. With its vast human capital and rapidly expanding economy, it harbors ambitions of becoming a global power. Yet this grand vision is significantly hampered by a deep-seated and chronic मतलब लगातार होने वाली insufficiency in research and development, जिसको हम R&D कह देते हैं. Despite having 17.5% of the world's brains, we're talking about population, India only produces a meager 3% of world's research output. WIPO, which is World Intellectual Property Organization, suggests a mixed picture: dramatic growth from a very low base, but overall an unimpressive performance. In 23, India ranked 6th globally for total patent filings, recording 64,000 plus applications, which is the fastest growth among top 20 countries. But in context of the total 3.55 million patent applications filed globally, India's share is still low, which is just less than 2%. Critically, when measuring residents' applications per million inhabitants, a truer reflection of domestic innovation intensity, India ranks significantly lower at 47th, underscoring that the overall growth is not yet translating into widespread population level innovation dominance. The most damning evidence of India's R&D gap lies in R&D expenditure. Gross expenditure on R&D in India, covering both private and public sector, has consistently hovered around 0.6 to 0.7% of GDP in the recent years, and it's slipping as our GDP is growing. This figure pales in comparison, matlab looks very less in comparison to major economies and innovation hubs. Like China was spending 2.4% of their GDP, US is spending 3.5%, Israel is spending 5.4%. और चाइना यूएस की तो जीडीपी भी इंडिया से बहुत बड़ी है. Most disappointingly, private sector participation in R&D spending is abysmal. Abysmal means very low. A global hallmark of mature innovation economy is the dominant role of the private sector in R&D. In developed countries, industry typically accounts for two-thirds or more of such expenditure. But in India, the government sector remains the main driver, contributing almost 63.6% of R&D funds, private sector contributing only 36%. The goal of building comprehensive tech and economic muscle worthy of a Viksit Bharat is not a sprint, but a marathon. It's a long-term game. And to achieve it, India must engineer a fundamental shift in approach. The most important critical step is to raise the R&D expenditure to GDP ratio to at least 2% in the next 5 to 7 years. India has climbed to 38th position out of 139 economies in the Global Innovation Index, improving from its rank. And India also rose from 81st to 38 in the lower middle income economies in Central and Southern Asia. And strengths are knowledge and technology outputs, market sophistication, weaknesses are business sophistication, infrastructure, and institutions. Top ranked are Switzerland, Sweden, US, South Korea, and Singapore. China ranked in top 10 for the first time, securing 10th position. Global innovation clusters की बात करें तो world's top innovation clusters are Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, which is first in China and Hong Kong, and then Tokyo, Yokohama, which is second in Japan. The next article talks about linked civilizations, a modern strategic partnership between India and Iran, and the relationships have transcended the boundary of conventional diplomacy. इसका मतलब यह है कि culturally भी बहुत significant partnership रही है इंडिया और ईरान की. They represent an ongoing dialogue between the two ancient civilizations that emerged from a shared cultural womb at the dawn of human history. You must have heard of Persian Empire. So Iran का पुराना नाम was Persia, and Iran had the Persian Empire, which was very dominant at a point of time in history. Long before the Aryan tribes divided, one settling on the Iranian plateau and the other in the fertile plains of Indus and Ganges, they spoke related languages, worshipped through similar myths, and held a common worldview. The profound resemblance between Avesta and the Rigveda stands as clear testimony to the shared origin. India's participation in the development of the Chabahar port, which is in Iran, signals the strategic weight both nations attach to this maritime gateway, and this port is to counter the Gwadar port in Pakistan. Complementing this, Iran forms a vital link in the INSTC, which is the International North-South Transport Corridor, a multimodal route between India to Russia and Northern Europe through Iran, which is approximately 40% shorter and 30% more cost efficient when compared to the traditional Suez Canal route, granting both countries a competitive advantage in Eurasian trade. But the future demands diversification beyond the traditional oil trade. The last article is regarding minorities. Our Prime Minister's participation in Christmas morning service at Cathedral Church in the national capital was one that was noticed globally. Amid numerous reports of intimidation and violence against Christians during the Christmas season, and even prior to that, Modi ji's visit to the church meant
a gesture of reassurance for the minority community in India's diverse social landscape. There are recent spurious charges of conversion, which, anyway, is a matter of personal liberty and freedom of religion protected by the Constitution, but they are often raised to justify the violence against Christians. Currently, only those communities notified under Section 2C of the National Commission of Minorities Act by the central government are regarded a minority. Supreme Court का 11 judge bench का judgment है in the TMFI case, which clearly determined the linguistic and religious minorities must be identified at the state level rather than national level. तो हो सकता है कि किसी एक स्टेट में लेट से एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो, दूसरे में वो मेजॉरिटी में हो सकती है. सो स्टेट लेवल पे आइडेंटिफिकेशन होता है. Section 2C of National Committees of Minorities gave the center unbridled power to inform minorities. In 1992, with the enactment of the National Commission of Minority Act, the Minority Commission became a statutory body and was renamed the National Commission of Minority. In 1993, the first statutory national commission was set up, and five religious communities, the Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Parsis, or the Zoroastrians, were notified as minorities. Jains were also notified as minorities in 2014. अब कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो देर आर अ फ्यू आर्टिकल्स विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी पुट माय चार्जर, लैपटॉप बंद हो जाएगा. ऑलराइट, क्या हुआ? चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं हुई भाई. ओह शिट, आई थिंक लाइट नहीं आ रही है. चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर. ओके, आई थिंक आई लॉस्ट माय पावर मिडवे. जल्दी से हम वोकेबलरी खत्म कर लेते हैं. द लास्ट सेगमेंट खत्म कर लेते हैं. आर्टिकल 29 where we talk about right of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture have the right to conserve it. This extends to both religious and linguistic minorities. Then Article 30 talks about right to establish and administer educational institutions. Article 25 is freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 26 is managing religious affairs. 27 is freedom of payment of taxes. And 28 is freedom to attend religious instruction. Lastly, India follows a concept of neutrality and a positive role towards religion. यहाँ पे we do not have a state religion, we are secular in nature. And ये जो term है socialist और secular, ये आए थे through the 42nd Constitutional Amendment Act. We also follow a principle of non-interference in matter of religions.
ठीक है जी. The vocab for the day is, the first word is measly. Measly मतलब होता है छोटा सा, contemptibly small or few, paltry, meager or scanty. That measly little paycheck barely covered the rent. The next word is parochial. Parochial मतलब होता है छोटी सोच, not broad or open in views or opinions, petty, small-minded or narrow. Local newspapers tend to be very parochial. The last word is deftly, which means चालाकी से, चतुराई से, in a neatly skillful and quick in movement manner. Masterfully, skillfully, adroitly, the company spokesperson deftly sidestepped the investigative reporter's questions. With that, we come to the end of today's discussion. Chandalekha is saying, if I'm not wrong, was your birthday month sometime this month? No, it's in January. It's 5th of January next month. All right, thank you so much. That's all for the day. Hello, Kushagra. I hope you're doing well. कल करते हैं बातचीत आपसे भी. आज के लिए यही सेशन एंड कर रहे हैं. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.